very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 2, which is more on Windows 10. So without wasting any further time, let's start it. The name of our new chapter is More on Windows 10, and the topics which we will discuss in this lesson are new features of Windows 10, creating a new desktop, utilities of Windows 10, working with the control panel, fonts, changing the mouse settings, replacing double click with single click, and power saving modes. तो विंडोज 10 बाय माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर आवर कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स एट प्रेजेंट. नाउ इट इज इजी टू यूज एंड ये हमें एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है. You get more security features and regular updates in Windows 10 to help safeguard against current and future threats. Now, due to its amazing features, it is gaining popularity day by day. In our previous class, you have learned about some of its unique features like Cortana, जो एक सर्च टूल है, Snap Assist, to Windows Store, a bundle of universal apps, etc. In this chapter, you will be introduced to some more innovative tools जो help करते हैं हमारी to get things done quickly. Now, new features of Windows 10. Windows 10 is loaded with multitasking tools. A custom start menu, live tiles हमें यहाँ पे मिलती हैं, Snap Assist, Task View, and virtual desktop to keep you organized, focused, and ready for anything. Let us read about its distinctive फीचर्स. फर्स्ट आता है मोर पर्सनल. तो आप इंजॉय कर सकते हो विंडोज 10 को लाइक अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड इट इज द बेस्ट विंडो इंटरफेस जो हमें प्रोवाइड करता है फीचर्स टू एनेबल योर डिवाइस एंड फोन टू रिमेन इन सिंक्रोनाइजेशन. आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपनी डेस्कटॉप को, चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर, थीम एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. कॉन्टिनम. तो एक न्यू फीचर है कॉन्टिनम इन विंडोज 10 जो हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को टू वर्क बेटर विद डिवाइसेस जो सपोर्ट करते हैं बोथ माउस एंड कीबोर्ड एंड टच इनपुट. नाउ फॉर कन्वर्टेबल डिवाइसेस देयर आर टू मोड्स, जैसे वी हैव टैबलेट एंड डेस्कटॉप. नाउ इफ यू विश टू यूज टैबलेट मोड तो आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे नोटिफिकेशन आइकन पे प्रेजेंट इन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द टास्क बार. दिस विल ओपन एन एक्शन सेंटर पेन. ये हमारे लिए एक्शन सेंटर पेन खोल देगा ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप. आप क्लिक करोगे ऑन द टैबलेट मोड बटन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द एक्शन सेंटर पेन. नाउ इन द टैबलेट मोड जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन होगा इन फुल स्क्रीन अलोंग विद द करंटली एक्टिव विंडो इफ एनी. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, टैबलेट मोड मैक्सिमाइजेस ऑल द एप्स, removes your taskbar icons and leaves only the essential notification tray items. जो टास्क बार है इन द टैबलेट मोड वो डिस्प्ले करता है हमें सिर्फ स्टार्ट बटन, बैक एरो, सर्च आइकन एंड द टास्क व्यू बटन. Windows 10 automatically change कर दे हो जाता है to this mode and if it detects that there is no keyboard attached. Now task view. Task view is another interesting feature of Windows 10 जो enable करता है हमें to organize the applications running on your computer. आप create कर सकते हो multiple desktops and view कर सकते हो all of them together by clicking on the task view button जो हमारे task bar पे located होता है. Now, when all the desktops are in view, you can also drag and drop an application from one desktop to another. Edge. Windows 10 browser Edge enable करता है हमें to conduct a safe and quick search on the internet. ये हमें provide करता है एक reading mode that opens a web page, displaying only the text and hiding all the other distractions जैसे graphics, images, etc. आप यहाँ पे also you can have articles and annotate the web page directly through Edge. Next is Cortana. Windows 10 has the most enhanced and powerful search tool Cortana जो आंसर करता है all the questions जो भी हम उससे पूछते हैं either in text या फिर verbally. For verbal search you need a microphone to talk and Cortana can play music, games, set alarms and reminders, take notes and emails, create and manage lists, find files, open any app on your system and browse the web to respond to your query. Now, to turn Cortana on, हमें click करना है on the search box on the taskbar, followed by another click on the gear icon on the left side of the displayed menu. एक setting menu appear हो जाएगा in the right pane. Turn Cortana on by moving the slider to the right of in the settings menu. Cortana will then start gathering information about you. Once activated, it becomes visible on the taskbar and आप also activate कर सकते हो Cortana को by giving a voice command like hey Cortana if you have a microphone attached to your computer. Action Center. The new Action Center of Windows 10 display करता है alerts for your device and all the apps in a slide layout pane.
cut, and all the apps in the slide out pane on the right side of the desktop. Upper part of the pane display करता है हमें tips and apps notification, while जो lower part है वो display करता है series of quick action buttons. ये जो buttons है ये enable करते हैं हमें to perform actions जैसे adjusting the screen brightness, turning Bluetooth on or off, switching or the tablet mode, along with the notifications, security tips, alarms, reminders, etc. are also displayed in the action center. Note, quick actions are a set of tiles that give access to frequently used settings and tasks. Windows Hello. So Windows Hello एक Microsoft का न्यू बिल्ट इन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम है फॉर Windows 10. ये अलाउ करता है टू सिंक इनटू योर सिस्टम यूजिंग डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, फेस या फिर आइरिस रिकॉग्निशन. एंड बायोमेट्रिक लॉगिन्स जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं, फास्ट होते हैं एंड दे आर वेरी इजी टू क्रिएट. विंडोज हेलो रिक्वायर करता है एक एप्रोप्रिएट हार्डवेयर डिवाइस टू बी कनेक्टेड टू द सिस्टम ताकि वो इंश्योर कर सके दैट इट वर्क्स प्रॉपर्ली. क्रिएटिंग अ न्यू डेस्कटॉप. तो इन विंडोज 10 आप क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल डेस्कटॉप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ एप्लीकेशन. तो टू क्रिएट अ न्यू डेस्कटॉप आपको क्लिक करना है टास्क व्यू बटन पे लोकेटेड ऑन द टास्क बार. टास्क व्यू पेन ओपन हो जाएगा एंड डिस्प्ले करेगा आपको प्रीव्यू ऑफ ऑल द ओपन विंडोज. आपको क्लिक करना है ऑन न्यू डेस्कटॉप बटन ऑन द टास्क व्यू पेन. एक न्यू डेस्कटॉप थंबनेल आ जाएगा विद नेम्ड डेस्कटॉप 2. हमें क्लिक करना है ऑन द थंबनेल टू व्यू द न्यूली क्रिएटेड डेस्कटॉप and it is a replica of desktop 1 but does not display the applications opened in desktop 1. वो जो न्यू डेस्कटॉप है वो बिल्कुल डेस्कटॉप 1 जैसा ही होगा बट जो एप्लीकेशंस डेस्कटॉप 1 में खुली हुई हैं वो इसमें नहीं खुली हुई होंगी. नाउ आप ओपन कर सकते हो एप्लीकेशंस दैट यू वांट टू यूज ऑन दिस डेस्कटॉप एंड यू कैन आल्सो ग्रुप द डेस्कटॉप विंडोज बाय ओपनिंग similar kind of applications in one desktop. Click on the task view button again to switch between the desktop. मूविंग एप्स बिटवीन डेस्कटॉप. तो उसके लिए हमें ओपन करना है अपना टास्क व्यू पेन बाय क्लिकिंग ऑन द टास्क व्यू बटन. प्लेस करना है माउस पॉइंटर को ओवर द डेस्कटॉप थंबनेल. नाउ इट विल डिस्प्ले द थंबनेल्स ऑफ ऑल द ओपन एप्स लाइक दिस. नाउ राइट क्लिक करना है हमें ऑन द ऐप दैट इज टू बी मूव्ड एंड सेलेक्ट करना है ऑप्शन मूव टू. नाउ दिस विल डिस्प्ले द डेस्कटॉप लिस्ट दैट यू हैव क्रिएटेड. आपको चूज करना है डेस्कटॉप टू विच आप उस ऐप को मूव कराना चाहते हो एंड द ऐप विल बी मूव्ड टू द सिलेक्टेड डेस्कटॉप. आप ऑल्सो ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो एप्लीकेशन विंडो को फ्रॉम वन डेस्कटॉप टू अनदर. क्लोजिंग अ डेस्कटॉप. सो टू क्लोज अ डेस्कटॉप हमें ओपन करना है टास्क व्यू पेन. प्लेस करना है माउस पॉइंटर ऑन द डेस्कटॉप दैट यू वांट टू क्लोज. देन क्लिक ऑन क्लोज बटन प्रेजेंट इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप थंबनेल टू क्लोज द डेस्कटॉप. यूटिलिटीज ऑफ विंडोज 10. तो विंडोज 10 प्रूव करता है मैनी यूटिलिटी प्रोग्राम्स फॉर डे टू डे यूज एंड एंटरटेनमेंट. फॉर एग्जाम्पल Windows Media Player, Disk Cleanup, Step Recorder, Character Map, Notepad, Shape Collector, Math Input Panel, etc. Let us discuss some of them one by one. So Windows Media Player. Windows Media Player एक application software है which comes with inbuilt in Windows 10. इसको यूज किया जाता है to play and organize both audio and video files on the computer. ये also allow करता है हमें to listen to music from the internet, radio stations. एंड ये जो एप्लीकेशन है ये अलाउ करती है टू प्ले, कॉपी या फिर क्रिएट सीडी डीवीडीज एज वेल एज कॉपी म्यूजिक एंड वीडियोज टू दी पोर्टेबल डिवाइस. कॉपी रिप सीडी टू योर कंप्यूटर. दैट मीन्स आप कॉपी कर सकते हो सॉन्ग्स को फ्रॉम योर फेवरेट म्यूजिक सीडीज या फिर डीवीडीज ऑन टू योर कंप्यूटर विद विंडोज मीडिया प्लेयर. नाउ व्हेन यू रिप म्यूजिक then you are actually copying songs from CD to the computer. तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हो, सॉन्ग को कॉपी कर रहे होते हो सीडी से कंप्यूटर में. आफ्टर द सॉन्ग हैव बीन कॉपीड ऑन योर कंप्यूटर आप यूज कर सकते हो विंडोज मीडिया प्लेयर को टू प्ले एंड ऑर्गेनाइज द सॉन्ग्स, क्रिएट कर सकते हो प्लेलिस्ट एंड कॉपी म्यूजिक टू अनदर पोर्टेबल डिवाइसेस. So let's see the steps to carry out the process. हमें क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, देन चूज विंडोज मीडिया प्लेयर फ्रॉम द लिस्ट. इंसर्ट एन ऑडियो CD DVD in the CD DVD drive. You will see a list of songs stored in the CD DVD in Windows Media Player. Now आप uncheck करोगे check boxes next to the songs that you do not want to RFA. Then you can use the checkbox at the top of the list either to select या फिर deselect the checkboxes at once. Now when you are done with the section, click on the rip CD button and the ripping process will start and you can see rip status of the individual songs. And to stop ripping process at any point आपको बस stop rip बटन पे क्लिक करना है. फिर आप क्लिक करोगे on the rip settings button and if you want to change the format of the file, enhance करना है आपको audio quality to the ripped music files या फिर आपको रखनी है अपनी default window media format settings में, तो
songs are ripped to the music folder in this PC folder, and after the songs have been ripped, आपको जाना है music folder पे to play them. You can also burn a CD DVD using software like Nero, Express Burn, etc. Copying data to CD DVD. So saving important information of a CD or DVD is as easy as saving it on the hard disk. तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का CD या फिर DVD बाय सेलेक्टिंग अ फोल्डर ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर मीडिया फाइल्स एंड ड्रैग कर सकते हो उसको टू आइकन CD DVD आइकन इन दिस PC फोल्डर. नाउ टू बर्न अ CD आपको इंसर्ट करना है ब्लैंक CD इन दी CD DVD ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर. द बर्न अ CD डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आपको मेंशन करने हैं CD DVD नेम इन द डिस्क टाइटल जैसे टेक्स्ट बॉक्स. सेलेक्ट करना है ऑप्शन विद CD DVD प्लेयर एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. एक एम्प्टी डिस्क फोल्डर ओपन हो जाएगा. ड्रैग करने अपने फाइल्स को दैट यू वांट टू बर्न इनटू दिस फोल्डर. फिर आप क्लिक करोगे ऑन द फिनिश बर्निंग ऑप्शन अंडर द मैनेज टैब. अगेन एक बर्न टू डिस्क डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. क्लिक टू द नेक्स्ट बटन. विंडोज मीडिया प्लेयर विल ओपन. क्लिक ऑन द स्टार्ट बर्न बटन प्लेस्ड अंडर द बर्न टैब. जो सॉन्ग्स हैं दे विल गेट बर्न टू द डिस्क. प्लेइंग एन ऑडियो वीडियो यूजिंग विंडोज मीडिया प्लेयर. तो आप प्ले कर सकते हो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियो और वीडियो फाइल्स इन विंडोज मीडिया प्लेयर. आपको बस क्लिक करना है स्टार्ट पे, स्क्रॉल करना है टू द विंडोज एसेसरीज एंड देन चूज विंडोज मीडिया प्लेयर. तो विंडोज मीडिया प्लेयर विंडो विल अपीयर. आप क्लिक करोगे ऑन द प्लेलिस्ट ऑप्शन अंडर लाइब्रेरी ऑप्शन ऑन द लेफ्ट पेन एंड इफ देयर आर नो प्लेलिस्ट देन आप क्लिक करोगे click here link pay to create a new list as shown in the middle of the window. Then as you click on the link under the playlist option, एक सब ऑप्शन आएगा with untitled playlist headings. Now यहाँ पे आपको टाइप करना है any name जैसे my playlist for your playlist and प्रेस करना है enter की. Now आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो playlist है in the middle pane of the window media player. Now right click करोगे आप my list पे in the left pane and you will be prompted to bring your media files here by drag and drop method. Select the media files from your folder, drag करके उनको drop करना है in the middle pane and you can now observe your media file added to the playlist. Now you can play them by clicking on the play button at the bottom of the window. Disk cleanup. If you want to remove some unnecessary files from your hard disk to free up your disk space, तो कंप्यूटर यहाँ पे हमारा रन हो जाएगा, फास्टली वर्क करेगा एंड यू कैन यूज द डिस्क क्लीनअप फीचर. ये एम्प्टी कर देता है हमारे रिसाइकल बिन को, रिमूव करता है टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, ऑफलाइन वेब पेजेस एंड अदर आइटम्स दैट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. So to use disk cleanup हमें क्लिक करना है on the start, scroll down to the Windows administrative tools and choose disk cleanup. Then या फिर आप टाइप भी कर सकते हो disk cleanup in the search box and press enter key. Disk cleanup drive section dialog box will open asking you to select the drive. Now आपको क्लिक करना है on the drop down arrow and select करना है drive that you want to clean up. Then click on OK. ये जो function है ये search करेगा और display करेगा unnecessary files which can be safely deleted. Now select the files that you want to remove and click OK. Working with the control panel. तो control panel एक system folder है using which आप changes create कर सकते हो in the appearance and current settings of the Windows. So these changes may include of the following: hardware and software setup and configuration, appearance and personalization of the desktop, network and internet, system and security, setting the clock, language and region, user accounts and family safety. और ये जो सेटिंग कंट्रोल है ये नियरली एवरीथिंग है रिगार्डिंग टू द विंडोज अपीयरेंस, इंटरनल सेटिंग्स एंड पर्सनलाइजेशन. ये अलाउ करते हैं हमें टू कस्टमाइज द विंडोज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. आप ओपन कर सकते हो कंट्रोल पैनल इन फॉलोइंग वेज. तो आप क्लिक करोगे स्टार्ट पे, स्क्रॉल डाउन टू द विंडोज सिस्टम एंड सिलेक्ट कंट्रोल पैनल फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट. या फिर आप कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हो इन द सर्च बॉक्स एंड देन प्रेस एंटर. चेंजिंग डेट एंड टाइम. तो टू चेंज कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम हमें क्लिक करना है डेट एंड टाइम ऑप्शन पे इन द कंट्रोल पैनल. डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स आएगा लाइक दिस. बाय डिफॉल्ट डेट एंड टाइम टैब इज सेलेक्टेड. टू चेंज डेट हम क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम बटन पे. द चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग बॉक्स जो आएगा वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे करंट डे इन द कैलेंडर दैट इज डिस्प्लेड. नाउ आप चेंज कर सकते हो मंथ यूजिंग द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरो बटन प्रेजेंट ऑन द कैलेंडर. एंड फॉर टाइम आप चेंज करोगे आर. Then select the R in the text box located below the clock. Now click on the spin arrows to increase या फिर decrease hours as desired. Similarly, आप change कर सकते हो minutes and seconds and click on OK. The date and time settings of the system will get changed accordingly. Fonts. Different styles of writing characters of text in a specific size are known as fonts. So some of the popular fonts are Arial, Calibri, Verdana, Times New Roman, etc.
Font settings are used to change the display of the text on the screen as well as on the paper while printing. आप यूज कर सकते हो कंट्रोल पैनल का टू व्यू फॉन्ट्स, ऐड कर सकते हो न्यू फॉन्ट या फिर डिलीट कर सकते हो existing fonts. So to view fonts in control panel, click on fonts option in the control panel. Fonts window appear हो जाएगी. Now to view the sample of a font, आपको just double click करना है on any given font. To add a new font, आपको क्या करना है, ओपन करना है दिस पीसी फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग इट्स आइकन ऑन द डेस्कटॉप. फिर आप सिलेक्ट करोगे एक एप्रोप्रिएट ड्राइव एंड देन ओपन करोगे फोल्डर दैट हैज न्यू फॉन्ट्स. सेलेक्ट करोगे फॉन्ट दैट यू वांट टू ऐड, ड्रैग करोगे उसको टू द फॉन्ट विंडो एंड द न्यू फॉन्ट विल बी एडेड इन द लिस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉन्ट्स. आप ऑल्सो कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपनी डिजायर्ड फॉन्ट को इन द फॉन्ट विंडो. डिलीट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है फॉन्ट दैट यू वांट टू डिलीट. क्लिक ऑन डिलीट बटन प्रेजेंट अबव द फॉन्ट थंबनेल्स टू रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट. चेंजिंग द माउस सेटिंग्स, तो आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने माउस की सेटिंग्स को इन वेरियस वेज, जैसे चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द माउस पॉइंटर, फंक्शंस ऑफ द माउस बटन्स या फिर अलर्टिंग द स्क्रॉल स्पीड ऑफ द माउस व्हील. तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है माउस ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल. द माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. नाउ जो बटन टैब है वो सिलेक्टेड होगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट. ये प्रोवाइड करता है हमें ऑप्शंस टू चेंज द सेटिंग्स ऑफ द माउस बटन, जैसे स्वैपिंग द फंक्शनैलिटी टू द ऑफ द लेफ्ट एंड राइट बटन, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग द डबल क्लिक स्पीड एटसेट्रा. तो अंडर बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन हमें सेलेक्ट करना है चेक बॉक्स टू मेक यूज द राइट बटन फॉर प्राइमरी फंक्शंस जैसे सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग. नाउ टू चेंज द डबल क्लिक स्पीड ऑफ योर माउस, ड्रैग करना है हमें स्लाइडर को अंडर द डबल क्लिक स्पीड सेक्शन टूवर्ड्स द लेफ्ट टू मेक इट स्लो एंड टूवर्ड्स द राइट टू मेक इट फास्ट. नाउ टू टेस्ट द स्पीड हम डबल क्लिक करेंगे अपने फोल्डर पे गिवन ऑन द राइट साइड and if the folder does not open या फिर close, try using the slower speed. And to change the appearance of your mouse pointer, आपको क्लिक करना है pointer tab पे. यहाँ पे you can change the size, color and shape of your mouse pointers. To change the pointer image, आप क्लिक करोगे on the scheme drop down list and choose कर सकते हो कोई भी एक mouse pointer scheme. आप also change कर सकते हो pointer images for particular functions जैसे normal, select, busy, etc. एंड टू डू सो आपको क्लिक करना है पॉइंटर फंक्शन पे इन द कस्टमाइज सेक्शन एंड देन आप क्लिक करोगे ब्राउज बटन पे. डबल क्लिक ऑन एनी फाइल नेम एंड ऑब्जर्व द चेंज. देन आफ्टर दैट आप क्लिक करोगे ऑन द अप्लाई बटन टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस या फिर आप यूज कर सकते हो डिफॉल्ट बटन का टू रिटर्न टू द डिफॉल्ट सेटिंग. नाउ आप ऑल्सो एडजस्ट कर सकते हो स्पीड ऑफ योर माउस पॉइंटर बाय क्लिकिंग ऑन द पॉइंटर ऑप्शन टैब एंड ड्रैग करोगे आप स्पीड स्लाइडर को सिमिलर टू एज शोन इन द फिगर. Now drag the slider from slow to fast under the motion section. Click on apply button and then click on OK. Replacing double click with a single click. So window has a feature to replace our double click settings of a mouse with a single click to open any file या फिर folder. So follow these simple steps to forget the practice of double clicking the mouse forever. आपको क्लिक करना है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस पे इन द कंट्रोल पैनल. फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. आपको टर्न ऑन करना है सिंगल क्लिक to open an item option present under the click item as follows section. Now from the sub options आप select कर सकते हो underline icon titles only when I point at them option. Click on apply and then click OK. Enjoy the experience of working with single click now. Remember to select any item from a list. आपको just place करना है अपने mouse pointer को there and the item would be highlighted. And to open the program या फिर document आपको बस उसको अब यहाँ पे single click करना. So the next we have is our power saving modes and different power saving modes available होते हैं to increase the battery life of your PC या फिर laptop. ये जो nodes हैं ये decrease करते हैं power being used by the background as well as the universal apps. तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारे पास sleep mode. Sleep mode एक power saving state होता है जहाँ पे हमारा कंप्यूटर जो है वो turn off नहीं होता completely. In this state जो हमारा monitor और hard disk है वो off हो जाते हैं. Now all the open documents and applications are put in RAM एंड जो सिस्टम है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर यहाँ पे ले रहा होता है. ये अलाउ करता है कंप्यूटर को टू क्विकली रिज्यूम फुल पावर ऑपरेशन जब भी आप वर्किंग स्टार्ट करते हो अगेन. स्लीप मोड इज यूजफुल इफ यू वांट टू स्टॉप वर्किंग फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स बिलो टू सेट योर कंप्यूटर इन स्लीप मोड. आपको क्लिक करना है ऑन द पावर ऑप्शंस इन द कंट्रोल पैनल, देन क्लिक ऑन द चेंज प्लान सेटिंग्स option next to the power saver radio button. Choose the duration of 2 minutes from the drop down list of the put the computer to sleep option and click on save changes button. नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइबरनेट मोड. तो हाइबरनेशन एक स्टेट होता है जहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन होता है टू सेव पावर, बट इट फर्स्ट सेव्स ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट्स
and running applications in the memory on hard disk. नाउ यानी कि ये ऑफ होने से पहले क्या करता है, हमारे रनिंग डॉक्यूमेंट्स को और एप्लीकेशंस को हार्ड डिस्क पे सेव करता है. व्हेन यू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, आपका डेस्कटॉप रीस्टोर होगा एग्जैक्टली जैसे आपने उसको छोड़ा था. तो हाइबरनेट ऑप्शन जो है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द पावर मेन्यू ऑफ विंडोज 10 बाय डिफॉल्ट. तो उसको यूज करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे ऑन द स्टार्ट बटन, या फिर हम प्रेस कर सकते हैं विंडोज की प्लस एक्स. देन पावर यूजर मेन्यू अपीयर होगा. सेलेक्ट करना है हमें कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन एंड क्लिक करना है ऑन द येस बटन इन यूजर अकाउंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स. Now on the command prompt हम टाइप करेंगे कमांड power cfg #h on and प्रेस करेंगे एंटर की. Now type exit and then press enter key to close the window. Now next ओपन करना है हमें कंट्रोल पैनल by clicking on start. Scroll down to the Windows system and control panel. Click on the power options. Power option dialog box will appear. Now click on the choose what the power button do option present on the left side. And then click करना है on change settings that are currently unavailable option. Now under shutdown settings हम click करेंगे on the hibernate checkbox and then click on the save changes tab. Now under shutdown settings आपको click करना है hibernate checkbox पे and then click on the save changes tab. Now you will have hibernate option as a part of your power button in the start menu. And now आप click कर सकते हो on the start button and then click on power button. Select the desired option from the displayed list, जैसे restart, sleep, hibernate, shutdown, etc. to put your computer into the selected mode. Now let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. The dash displays alerts for your device and all the apps in the slide out pane on the right side of your desktop action center. Now dash is a Windows 10 helps you to quickly find information on the internet. Cortina. You can customize the mouse settings by selecting the dash option in the control panel. Mouse. Dash is a power saving state wherein computer does not turn off completely, sleep mode. And the dash is a new feature in Windows 10 which enables you to organize the applications running on your computer. Task view. Let's do true false. Windows 10 automatically change करता है into tablet mode if it detects there is no keyboard attached. True. Windows Hello enable करता है हमें to perform quick actions as adjusting screen brightness. But it is false. Then you can drag and drop an app from one desktop to another in the task view pane. 2. Burning a CD and ripping a CD are two entirely different operations. False. The reading mode of Microsoft Edge open करता है हमारे लिए एक web page with only the pictures displayed. False. Let's do fill in the blanks. So our first question is dash refers to the copy songs from CD DVD to a computer. It is ripping. Dash is used to remove the unnecessary files from a computer hard disk. Disk cleanup. Dash allows you to sign in to your computer system using data, fingerprint, face or iris recognition. It is biometric. Authentication. Dash allows you to change Windows 10 into a touch-friendly interface called the tablet mode. Tablet mode. Different styles of writing characters in a specific style are known as fonts. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it again and learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.